Good morning, students of class 4. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 108 as I'll be continuing with Unit 30, Mixed Bag. Students, please take out your English grammar book and turn the page to page number 108 as I'll be continuing with the exercise 1 of Unit 30, Mixed Bag. Students, in this unit, there are different exercises of the units which I have already taught. शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी यूनिट्स जो अभी तक मैंने पढ़ाए हैं इस बुक के, उन सब की कुछ कुछ एक्सरसाइजेस सेंटेंसेस दिए हुए हैं. So while solving this exercise, we will be revising the short exercise. Fine. In my last video, students, I had started with this exercise. I had completed Unit 29, that is formative activities, and then I started with Unit 13, and I had done the first third fill in the blanks. Now today, first of all, I am going to revise the first third fill in the blanks, and then I am going to start with the fourth one. So, the first fill in the blank is work dash worship. Work dash worship, and the options given are is oblique are. So we need to choose the word is, है ना? Is और are helping verbs हैं जो हम present tense के साथ use करते हैं. अब वर्क को हम सिंगुलर लेते हैं, इसलिए हम वर्क के साथ इज लगाएंगे. ठीक है, वर्क को हम सिंगुलर नाउन कंसिडर करेंगे. इट इज अनकाउंटेबल. फाइन. सो वर्क के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे? इज. सो राइट इज इन द फर्स्ट ब्लैंक. हमारा सेंटेंस क्या हो गया? वर्क इज वर्शिप. देन द सेकेंड वन, डू डैश die. Do dash die, and the options given are and, oblique, or. Fine. And or, both these words are conjunctions. And what are conjunctions? Conjunctions are joining words. They join words, group of words, or sentences. अब do dash die, and हम similar मीनिंग वाले वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं, whereas और हम यूज करते हैं जहां हमारे पास चॉइस हो. तो यहाँ पे डू और डाई, देयर इज अ चॉइस, सो वी बी राइटिंग और इन दी सेकेंड ब्लैंक. डू और डाई, राइट, और इन दी सेकेंड ब्लैंक. देन दी थर्ड वन, डैश कैपिटल of India dash capital of India is New Delhi, and the options given are A, oblique, the. ठीक है, the is the definite article and we use it with definite things. and यहाँ हम एक particular capital के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? definite article the, and T of the will be capital because we are beginning the sentence. तो हमारा sentence क्या हो गया? The capital of India is New Delhi. Fine. I hope everybody has done. So, ये मैंने फर्स्ट 3 fill in the blanks जो आपके लास्ट वीडियो में कराए थे वो उनको रिवाइज किया. Now I'm going to start with the fourth one, and the fourth sentence is keep to the left. Keep to the left, full stop. It is A, oblique end dash sentence. And जो options
बेटा दिए हुए हैं ब्रैकेट में, वो क्या है? इम्पेरेटिव एंड assertive. Imperative sentence and assertive sentence. Now, let's revise. Before solving this, let's revise our unit kinds of sentences. Fine. अब जो है हम अपना kinds of sentences unit 5 वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना? Now students, all of you know that there are 4 kinds of sentences. Total बेटा कितने kinds of sentences हैं? 4 kinds of, है ना? First है declarative और assertive या statement. If you turn to page number 17, you will be able to see this, है ना? अगर आप page number 17 पे आप turn करोगे, so you can see the 4 kind of sentences. Please turn to page number 17 of your English grammar book. There are 4 kinds of sentences. पहला है declarative और assertive और statement, ठीक है? Then the second is interrogative sentences. Third, exclamatory sentence, and fourth is imperative sentence. Fine. अब बेटा फर्स्ट जो सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, सॉरी जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं वो सेंटेंसेस सिंपली किसी चीज को स्टेट करते हैं. दी असर्टिव सेंटेंस सिंपली स्टेट समथिंग, है ना? और ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकते हैं या नेगेटिव, ठीक है? ये सिंपली स्टेट करते हैं, ये अफर्मेटिव हो सकते हैं या नेगेटिव. Then the second kind of sentences are the interrogative sentences. Now, these sentences जो interrogative sentences होते हैं, they are all questions. जो भी questions आप ask करते हैं, they are known as the interrogative sentences and they end with a question mark. Then students, the third kind of sentence is the imperative sentence. जो third kind of sentence है वो imperative sentences है. And these sentences expresses commands, request, advice और order. हम किसी को भी कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो सारे किस में आएंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में. एंड ये सेंटेंसेस एंड इन अ फुल स्टॉप. जनरली इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस दोनों ही फुल स्टॉप में एंड करते हैं. सो चिल्ड्रन टेंड टू गेट कंफ्यूज. बट असर्टिव सेंटेंस है वो सिंपली किसी चीज को स्टेट करते हैं, वेरएज जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो एक्सप्रेस करते हैं कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर. ये आपको बेसिक जो है ध्यान में रखना है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है? एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस में बेटा सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है. जनरली द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन इन द इम्पेरेटिव सेंटेंस and it is understood that the speaker is talking to you. Imperative sentence में बेटा subject नहीं mention होता है and it is understood that the speaker is talking to you. Fine. Now if you look at this sentence, keep to the left, है ना? ये advice है ना? ये advice किसी ने दी है. तो जब कोई advice देता है तो फिर वो कौन सा sentence होगा? वो imperative sentence होगा, है ना? So we put a tick on imperative sentence. Now there is one more option. It is A/N. अब अगर हम यहाँ पे imperative sentence लिख रहे हैं, imperative sentence keep to the left. अब इसमें A और N कहाँ आएगा? So we need to revise the articles also, है ना? A और N दोनों indefinite article हैं और दोनों ही singular countable nouns के पहले यूज होते हैं. But difference क्या है? हम indefinite article को उन words के पहले यूज करते हैं which begin with a consonant sound. जो भी words consonant sound से begin करते हैं and which are singular countable nouns, उनके आगे हम A लगाएंगे. Whereas जो भी words जो singular countable nouns हो और जो vowel के sound से begin करते हैं उनके आगे हम N लगाएंगे. Now if you look at this word imperative, ठीक है? Imperative sentence, ठीक है? ये इसमें वावल का साउंड आ रहा है तो हम इसमें क्या चूज करेंगे? एन. फाइन. सो
Keep to the left, it is an imperative sentence. Why it is an imperative sentence? Because it is expressing an advice. And you need to keep in mind कि imperative sentence में generally subject नहीं होता, and it is assumed that the speaker is talking to you. So I hope सबने लिख लिया है. Keep to the left, it is an imperative sentence. Then our next sentence is the fifth one. That is, what a wonderful, what a wonderful surprise. At the end, exclamation mark is there, and it is an dash sentence. Again, the options given are interrogative and exclamative. Interrogative sentence or exclamatory sentence. अब 4 kinds of sentences मैंने आपको जो पढ़ाए थे, उसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वो क्या बताया था बेटा? दे आर ऑल दी, वो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, विच एंड विद द क्वेश्चन मार्क, दे आर ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वेयर एज जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, दे ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना. और यहाँ पे आप देखोगे एक्सक्लेमेशन मार्क सबको दिख रहा है कि नहीं? Exclamatory sentences end with an exclamation mark, and these sentences, exclamatory sentences, expresses some strong sudden feeling or emotion, है ना. ये जो exclamatory sentences होते हैं, ये हमारे sudden strong feelings या emotion को express करते हैं, and they always end with an exclamation mark. Interrogative sentence, they are all questions and they end with a question mark. और यहाँ पे what a wonderful surprise, हमारा जो surprise, wonder वाला जो emotion है, feeling है, वो express होगी. And you can see the exclamation mark at the end. So जो correct option है वो कौन सा है बेटा? Exclamatory sentence. So please write exclamatory in the 5th line. ठीक है? I hope everybody has done. अभी सबको ये 5 sentences समझ में आ गए, है ना? And you need to keep in mind, students, that there are 4 kinds of sentences. The first one is the declarative, assertive or statement. The second is interrogative, third is imperative, and fourth is exclamatory. Fine? Now, I'm going to erase these 5 sentences and write the 6th one. Now, जो 6th sentence है, that is, she is tall. She is tall, but I dash tall. Fine. अब यहाँ पे M और R दो ऑप्शन दिए, ठीक है ना. सेंटेंस क्या है? शी इज टॉल बट आई डैश टॉल. अब बेटा इस एम आर ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है. हम इस कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव गॉट आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर. सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम इज यूज करते हैं, ठीक है. हम आर कब यूज करते हैं? व्हेन दी सब्जेक्ट इज प्लूरल. हम आर यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल, मोर देन वन. और प्रेजेंट टेंस में जो तीसरा हेल्पिंग वर्ब है दैट इज एम, वो हम कब यूज करते हैं?
when the subject is I. ठीक है, जब सब्जेक्ट हमारा I होता है तो हम am यूज करते हैं ना. is, am, are ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये किसके अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट. इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर हम हेल्पिंग वर्ब इज लेते हैं. इफ दी सब्जेक्ट इज प्लूरल हम हेल्पिंग वर्ब आर लेते हैं. अगर सब्जेक्ट आए हैं प्रेजेंट टेंस में तो हम एम यूज करेंगे. एंड अभी सब लोग ट्राई टू रिकॉल सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में. द स्पीकर और द डूअर ऑफ द एक्शन इज द सब्जेक्ट. अब यहाँ पे शी इज टॉल बट आई डैश टॉलर. आई यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? एम. राइट एम. ठीक है, राइट एम इन द सिक्स्थ ब्लैंक. प्रेजेंट टेंस में आपको सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर यूज करना है. इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर आप इज यूज करेंगे. इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल आप आर यूज करेंगे. और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल आई है दैट इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तो आप हमेशा एम ही यूज करेंगे. नाउ द सेवेंथ वन, माय sister and I dash taller than you. My sister and I taller than you, and the options again given are M and R. Now, अब बेटा ये सेंटेंस आपको थोड़ा समझना है. ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि my sister and I dash taller than you. एज आई सेड कि अभी इसमें ऑप्शन दिया M और R. प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज कब यूज करते हैं? व्हेन दी सब्जेक्ट इज सिंगुलर. आर कब यूज करते हैं? व्हेन दी सब्जेक्ट इज प्लूरल. और एम कब यूज करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट आई है. अभी आप सोचोगे कि मैम ने ऊपर में शी इज टॉल बट आई एम टॉलर, है ना. बट यहाँ पे देखो बट लिखा है ना. बट के बाद आई आया है तो यहाँ पे हमने एम लिया. एंड इफ यू लुक एट दी सेवेंथ सेंटेंस, माई सिस्टर एंड आई, दैट मीन्स सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट ये हो गया माई सिस्टर एंड आई. यहाँ पे खाली आई सब्जेक्ट था और यहाँ पे एंड लगा है. यहाँ पे कंजक्शन एंड बीच में लगा है. दैट इंडिकेट्स द सब्जेक्ट माई सिस्टर एंड आई, यू आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स, है ना. तो टू है, प्लूरल हो गया. तो जब प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि किसके बारे में बात कर रहे हैं? माई सिस्टर एंड आई, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया. तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? आर, है ना. आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि आई बैग के पहले है तो आर बंद करके एम लिख देते. आई हैव सीन स्टूडेंट्स कमिटिंग दिस ब्लंडर. यू नीड टू लुक केयरफुली एट द सब्जेक्ट. यहाँ पे बट था तो आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया. शी है, शी इज टॉल, बट यहाँ पे आई सिंगल आई था. बट यहाँ पे माई सिस्टर एंड आई, द सब्जेक्ट इज प्लूरल तो हम हेल्पिंग वर्ब आर लिखेंगे. माई सिस्टर एंड आई आर टॉलर देन यू. ठीक है, खाली आई होता तो आई एम टॉलर देन यू. बट माई सिस्टर एंड आई वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल. सो प्लूरल हो गया सब्जेक्ट तो आर. गॉट इट? नाउ the eighth one. It is about to rain. It is about to rain. Go home dash. And the options are immediately, and already.
Now, it is about to rain, go home, dash. इसमें हम adverb of time immediately fill करेंगे. क्या करेंगे? It is about to rain, go home now. Sorry, go home immediately. Immediately क्या है? Adverb of time. तो हम यहाँ पे कौन सा adverb भरेंगे बेटा? Immediately. And ये time बता रहा है ना? ये तुरंत जाओ. So immediately is adverb of time. Fine. So it is about to rain. Go home immediately. Write immediately in the blank. Because हमको इससे आंसर क्या मिल रहा है? Go home immediately. When to go home? Immediately. When का आंसर मिल रहा है? When adverb. So when adverbs are what? They are the adverb of time. Now, I hope everybody has done, students. I'll revise and then I'm going to erase. Sixth one. She is tall, but I am taller. Write M in the sixth blank. 7. My sister and I are taller than you. Write R in the seventh blank. Then the eighth one. It is about to rain. Go home immediately. Write immediately in the eighth one. So now I'm going to erase the board and write the 9 in the blanks. Now, the 9th fill in the blank is wood is dash then iron. Fine. And the डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लाइट पॉजिटिव डिग्री है और लाइटर कंपैरेटिव डिग्री है. ठीक है. अब हमें दोनों में से सूटेबल को इसमें फिल करना है. ठीक है. नाउ लेट्स रिवाइज द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर देयर स्टूडेंट्स? देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. द फर्स्ट इज द पॉजिटिव डिग्री. ठीक है. पहली कौन सी है बेटा? पॉजिटिव डिग्री. Second is the comparative degree and the third is superlative degree. ये 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ठीक है. अब हम इन तीनों को भी रिवाइज करेंगे. पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम कब यूज करते हैं बेटा? जब हम सिंपली किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. उसका कोई किसी भी चीज को किसी चीज से कंपैरिजन नहीं करते हैं, सिंपली किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं और या कोई दो चीजों को हम इक्वल कंसिडर करते हैं. ठीक है. तब हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं. ठीक है. और आपको मैंने क्या कीवर्ड समझाए थे पॉजिटिव डिग्री के पहले? ए, एन, वेरी, है ना. ये सारे वर्ड्स जनरली आते हैं. ठीक है. वेयर एज जो कंपैरेटिव डिग्री है वो हम कब यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री जनरली पॉजिटिव डिग्री के एंड में आर, ई आर, आई आर या वर्ड के आगे अगर मोर देन 2 सिलेबल वर्ड है तो उसके वर्ड के आगे एडजेक्टिव के आगे मोर लगा के हम फॉर्म करते हैं. और कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन्स और 2 थिंग्स. जब कोई भी 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स में कंपैरिजन है तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं. एंड जनरली स्टूडेंट्स कंपैरेटिव डिग्री में डिग्री के बाद PHAN देन आता है. Generally I am saying, not always but generally. Then the third kind of degree is the superlative degree, the greatest degree of comparison. Fine. Or superlative degree, when do we use? When there is a comparison in more than 2 persons or things. जब 2 से ज़्यादा things या persons में comparison है तो हम superlative degree use करते हैं. And superlative degree कैसे form होती है? वो जो positive degree के end में ST, EST, IEST या मोर देन 2 सिलेबल वाला एडजेक्टिव हो तो उनके आगे मोस्ट लगा के हम फॉर्म करते हैं. एंड सुपरलेटिव डिग्री में बेटा हमेशा
जो सुपरलेटिव डिग्री के पहले THE द आता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमको देखना है वुड इज डैश देन आयरन। यहाँ पे कंपैरिजन कितने चीजों में है? देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, वुड और आयरन में। सो जब दो चीजों में कंपैरिजन है बेटा, तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? कंपैरेटिव, है ना। और अब देखो ब्लैंक के बाद क्या है, ये वर्ड आपको ध्यान देना है, देन है। सो ये इंडिकेट करता है कि कंपैरेटिव डिग्री। अब वर्ड्स क्या है? लाइट दैट इज पॉजिटिव डिग्री एंड लाइटर इज द कंपैरेटिव डिग्री। तो हम कौन सा चूज करेंगे? लाइटर द कंपैरेटिव डिग्री। सो प्लीज राइट लाइटर इन द 9th ब्लैंक। क्लियर? सो हमने कंपैरेटिव डिग्री लाइटर यूज की है, फाइन। एंड आपको जो इफ यू टर्न बैक टू द यूनिट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, देयर आर रूल्स गिवन कि हाउ टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव डिग्री। सो प्लीज लर्न दोज रूल्स बाय हार्ट, फाइन। नाउ the last fill in the blanks of this exercise, that is 10, is I wanted to swim dash the water was too cold and the options are so oblique but, ठीक है। अब so and but ये क्या है बेटा? ये दोनों ही conjunctions हैं। What are conjunctions? Conjunctions are joining words. They join words, group of words, phrases and sentences. Fine. अब बेटा सो कंजक्शन जो है वो हम कब यूज करते हैं? जब रीजन पहले दिया है, उसका इफेक्ट बाद में हो, वहां हम सो यूज करते हैं। और बट हम यूज करते हैं जब कॉन्ट्रास्ट हो। सो आई वांटेड टू स्विम, जो हिंदी में हम जिसको लेकिन बोलते हैं, वो यहाँ पे बट आया। बट द वाटर वॉज टू कोल्ड, स्विम क्यों नहीं किया? बट द वाटर वॉज टू कोल्ड। सो राइट बट इन द 10th blank. Fine. So I hope everybody has done. So with this we have finished our exercise 1, students. Clear? Now I'm going to erase and start with exercise 2. Exercise 2 is based on tenses. अब बेटा एक्सरसाइज 2 अगर हमको अच्छे से आनी चाहिए तो हमें सारे टेंसेस के फॉर्मूले पता होना चाहिए, फाइन। नाउ एक्सरसाइज 2 इज चेंज द टेंस ऑफ these sentences as directed. Change the tense of these sentences as directed. Fine. Now, इसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि कोई भी सेंटेंस में जब भी हम टेंस चेंज करते हैं, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू शुड नो इज आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द वर्ब। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको चेंज करने को टेंस आता है तो पहला स्टेप है दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड अंडरलाइनिंग द वर्ब, क्योंकि वर्ब ही सेंटेंस में वो चीज है जिसका टेंस हम चेंज करते हैं एज पर द फॉर्मूला, है ना। वर्ब भी खाली चेंज होता है, द रिमेनिंग सेंटेंस रिमेन्स द सेम। सो ये अगर एक्सरसाइज करनी है तो सबसे पहले हमको वर्ब आइडेंटिफाई करना सेंटेंस में आना चाहिए, बिकॉज इट इज द वर्ब ओनली विच इज चेंज इन द सेंटेंस, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेन द सेम। सो नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट आर वर्ब्स। वर्ब्स आर द एक्शंस, जो भी आप एक्शंस करते हैं, डूइंग वर्ड्स, जो भी सेंटेंस में वर्ड जिससे हमारा एक्शन पता होता है दैट इज वर्ब। और वर्ब भी है जो चेंज होता है टेंसेस में एज पर द फॉर्मूला,
फाइन. सो सबसे पहले आपको वर्ब समझना जरूरी है, वर्ब को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, बिकॉज वर्ब भी बताएगा कि किस टेंस में सेंटेंस है और आपको किस टेंस में उसको चेंज करना है. फाइन. सो स्टूडेंट्स, आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस एक्सरसाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. That's all for today. Please do learn and revise all the taught exercises. Thank you, students. Good day ahead.